if we consider, we consider second order differential equation of the form, which is in general, you can write this is py prime, this is the dy by dx, and the dy by dx of that, this is this prime of that, plus qy plus lambda y, that equals to 0 for any x which belongs to a closed interval a and b. Okay, so suppose this is equation 1, and here what is your, here this is a, if you differentiate that, and here p q r are the function of x. Okay, so this means here the, if we derivative of that d by dx of that, so we get p prime here. Okay, so here this is p prime, and here q and r are real valued function. Okay, and real valued, of course, continuous function, real valued continuous function, which is defined on this closed interval AB. Okay, so here, and what is your lambda? So your lambda is basically a real parameter. So here lambda is real parameter. So let us consider the boundary conditions. So if we consider two sets of boundary condition, and that are, suppose if we write m1 y at a, m2 y prime at a, that equals to 0, and suppose m3 at another point yb, m4 y prime b, suppose this equals to 0. This is question number 1. Suppose this is 2. 2 are, you can write here, this is basically two conditions, so 2a and 2b, and this is basically equation 2. Okay, so if the another condition, boundary condition, which is a periodic, so if we write ya is equals to yb, y prime a is y prime b, these are the boundary conditions are given at a and b, and suppose our the functional value at point a and point b are also same. Suppose this is your another boundary condition, so equation number 3. Okay, here there are because both are non-zero, because at least one is non-zero here, because if both are 0, then 0 equals 0, so no sense of that boundary condition. Okay, so in this m1 and m2 for equation 2a, there are at least one is non-zero. Similarly for this m3 and m4, there are at least one is non-zero. Of course, so both are non-zero maybe, and are at least one of them is non-zero. Okay, so we can write here where there at least one of this m1 and m2, and at least for second condition 2b, so we can write at least one of m3 and m4 are non-zero. Okay, so here this equation number 3, what is equation number 3? This is your basically periodic boundary condition. So we can write here what is your equation 3. So equation 3 is the periodic boundary conditions. Okay, so boundary condition at point y equals to a and y equals to b. Okay, so these are the periodic boundary condition. Okay, so here okay,
So the boundary condition means if we take a boundary value problem, if we take boundary value problem, and which consisting this equation one, this is your differential equation, second order differential equation, equation one. Okay, equation one इस equation को आप ऐसे भी लिख सकते हो. This is can be written as in some books dy by dx, and this is p dy over dx plus q y plus lambda y, that equals to 0. Okay, so this is your second order differential equation. And with boundary value problem, we say that this is a boundary value problem when this equation 1 and equation 2 are, we take equation 1 with equation 3. Okay, either we take this boundary condition, normal boundary condition, or we take this periodic boundary condition. So boundary value problem with equation 1 with 2 or equation 1 with 3, there are two types of boundary value problem. Okay, so boundary value problem consisting of equation 1 with 2 or equation 1 with 3, these are called as Sturm-Liouville's boundary value problem. Okay, so here you can write here. Okay, so in next page, a boundary value problem consisting of equation 1 with equation 2 or you can write equation 1 with equation 3. This is called Sturm-Liouville's boundary value problem. Okay, so here we are interested to find the non-trivial solution of this Sturm-Liouville's boundary value problem. Okay, so here the zero function that is y equals to 0. Okay, so zero function that is y equals to 0, and I think it is clear to all of you. Okay. Am I audible to or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Because here in my computer this is showing this is no internet connection, so that's why हमें लगा कि शायद कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं. ठीक है, चलिए. Okay. So here this zero function means y equals to 0. Zero function. Hello, sir. 0 on this closed interval Hello. a b. हाँ बोले. सर ये जो आपने ऊपर लिखा हुआ है इक्वेशन 2 और इक्वेशन के बाद मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? This is equation So 1. equation 1 मिस हो गया है. Equation 1 with equation 2 or equation 1 with equation 3. Okay. Either आप इक्वेशन फर्स्ट में जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हम ये बाउंड्री कंडीशन यूज करें या फिर हम पीरियोडिक करें, दोनों कंडीशन को अगर हम ऐसी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम चूज करें, दैट बाउंड्री प्रॉब्लम इज सेड टू बी स्टर्म-लिउविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. Okay, so now here zero function that is the y equals to 0 on closed interval AB is your trivial solution. Okay, so because if you putting in equation number 1, if y equals to 0, that is your zero function. Okay, so this is your trivial solution of Sturm-Liouville's problem. But here we are interested to examine the existence of non-trivial solution of Sturm-Liouville's problem and their properties. Okay, so हम यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की हम हमेशा बात करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो सपोज
Suppose that for a value of lambda, you find y lambda. This is a non-trivial. This is non-trivial solution of equation 1 with equation 1 with equation 2, or suppose equation 1 with equation 3. Okay, so this means this is your non-trivial solution of your Sturm Liouville's problem. Okay, so then we call this lambda, what is you call lambda? Lambda is called an eigenvalue. Lambda is called an eigenvalues. And what is y lambda? So y lambda is the functional value. So this is called the eigenfunction of the Sturm Liouville's problem. Okay, of equation 1 with equation 2, or equation 1 with equation 3. Okay, respectively. Okay. So here, basically, there are 4 theorems basically. Okay. So here, this is theorem first, and this theorem says that this theorem first in theorem first, it was theorem 1. Okay, and this theorem says that if you assume this interval a and b, means this x is defined on closed interval, finite interval. So if a and b are finite real numbers, and second, the functions, that is your p prime, q, and r, these functions are real valued functions, real valued continuous function. Okay, on that given interval AB. And third condition is your M1, M2, these are the constants from boundary value problem, boundary conditions, M3 and M4, these are real numbers. Okay, so if you assume that this condition is holds, okay, so then your theorem says that then the Sturm-Liouville's problem, that is equation first. Sir, Uh-huh. sir, what you write, sir, after the functions p dash, p prime, q, and r are real valued? Okay, so this equals to assume that first a, b are finite real numbers. Second one, the functions p prime, q, and r, okay, q and r are real valued continuous function, on this Okay, sir, continuous. given domain AB. Okay, so then this Sturm-Liouville's problem, equation 1. हेलो सर हाँ, सर ये SLP जो आपने लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है? वही Sturm-Liouville's problem, that is your Sturm-Liouville's problem, that is your Okay, sir. okay. So this equation 1 with equation, you can take equation 2, or equation first with equation third. Okay, so this has, if this condition holds, then this has countably, this has countably many eigenvalues. Okay, so this is you can say this eigen values.
Okay, so so this is a finite. So this means you can say your eigenfunctions corresponding to the each eigenvalues. So they must be a finite. Okay, so this means you can write consequently. Okay, so consequently, uh, corresponding to each eigenvalue, corresponding to each eigenvalues, uh, there exists there exists an eigenfunction. Okay. So this is eigenvalues. ये आपके एक साथ ही होंगे. Okay. So corresponding to each eigenvalue, there exists an eigenfunction. Okay. So basically, this theorem first just guarantees the existence of solution. Okay. तो यदि आपका ऐसा है, ए बी आपके जो वो फाइनाइट इंटरवल है और ये सारी फंक्शन आपके रियल वैल्यू फंक्शन है, ओके, इस गिवन डोमेन में, और ये सभी आपके जो बाउंड्री कंडीशंस आर रियल नंबर्स हैं, ओके, आइदर एटलीस्ट वन और anyone are zero or non-zero, okay, that is sense of, okay, because these are any real numbers, then this term with this problem, that is with equation 1 with 2, or we take this periodic condition, okay, so this has finite eigenvalues, and corresponding to that each eigenvalues there exists an eigenfunction. So basically this eigenfunction means this is a solution corresponding to that lambda. Okay, so this guarantees the existence of your solution. So basically, this theorem first guarantees the existence of solution. So you can write here this theorem first. This theorem first just guarantees the existence of solution. Okay, so this is the remark of this theorem. So the next one is basically Sturm-Liouville boundary value problem has the property is that this generate the sets of orthogonal functions. Okay, so here what is the orthogonal function? So in next page we define what is orthogonal function. The next page, this is a definition of two functions. Suppose u and v. Okay, two functions. Suppose u and v, and basically these are the continuous functions, or you can write a smooth function. Okay, so this is smooth enough. Okay, so this two functions u and v, which is defined and continuous on the given domain AB, these two functions are said to be orthogonal. This is said to be orthogonal with respect to any weight function. So to a continuous weight function, say we take R, if the integral of this domain A to B of this weight function with u and v, that is the smooth continuous function. So this is u and v, and this equals to 0. Okay, and if these two are orthogonal, if without any weight function, so if we take weight function is 1, so these two are orthogonal if integral a to b u and v that equals to 0. Okay, so this means these two are orthogonal, and these two are orthogonal with respect to any weight function. So here we multiply that weight. Okay, so here this is the definition, and then
This is theorem 2. Okay, so this second theorem says that let all the assumptions of theorem first, okay, and basically this theorem first guarantees the existence of that solution. If this theorem first hold, so for the parameter, and if we take two parameters, that is your lambda and mu, and of course they are not equal, there are two distinct parameters, and we suppose your u and v be the corresponding solutions. Okay, so of your equation first says that this condition is hold. This is P of Roskian uv of a to b that equals to 0. Okay, so what is the w here? So where this w of uv is the Roskian of u and v. And what is this sense? Say any z, if we write a and b, this means simply this functional value and this. Okay, so this means this functional value at b minus this a. Okay, this is a and b. Okay, so then if this condition holds, then you have to prove that this integral a to b, this rs with u and v that equals to 0. Okay, so you have to prove that if this condition is hold, if that all assumptions of theorem first is hold, this means this guarantees the solution, and your equation 1 has the two parameters. There are two differential equations with parameter lambda and mu, and the corresponding solutions for u and v. For lambda equals के लिए हमारा u solution है और mu के लिए हमारा v है, और ये कंडीशन अगर हमारी होल्ड करती है तो आपको प्रूव करनी होगी कि that a to b this equals to 0, or you say that this u v are orthogonal with respect to this weight function r. Okay, so here the proof of this theorem. So we take in next page and try to prove this theorem. Okay, सर इसमें वेट फंक्शन क्या है? तो वेट फंक्शन आप वेट फंक्शन कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन आपने ले लिया, आपको ये बताने कि ये दोनों फंक्शंस बेसिकली ऑर्थोगोनलिटी का सेंस ये है कि दोनों के दोनों हमारे इंटीग्रल इसमें हमारे 0 हो. ओके, बट कहीं यूजुअली यहाँ पे वेट हम जनरली हम 1 लेते हैं, बट कहीं कहीं हमारे पास थोड़ा सा ये है कि हम दो फंक्शंस लें और उनको हम उनकी ऑर्थोगोनलिटी की बात करें करस्पॉन्डिंग टू एनी वेट फंक्शन. ओके, तो उस सेंस में हमें उसको हमने यहाँ पे आइदर दिस r is equals to 1 in the particular case of that r is equals to 1. ओके, या फिर आप कोई भी इसमें कंटीन्यूअस फंक्शन आप ले सकते हो, जो कि हमारे इस डोमेन में हमारे बिलोंग करें और वो फंक्शन आपका क्या हो, कंटीन्यूअस हो. उस सेंस में आप ये कहेंगे कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं हमारे दैट आर ऑर्थोगोनल विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेट फंक्शन. और यदि आपका ये दैट इक्वल्स टू 1, दिस सिंपली सेज दैट दीज टू आर इन सिंपली ऑर्थोगोनल. ओके, तो दो फंक्शंस हमारे क्या है, ऑर्थोगोनल ही है. तो वहां पे हम किसी थर्ड फंक्शन की हम बात नहीं करेंगे कि इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में या ऐसा कुछ. ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे फिलहाल इन 2 डायमेंशनल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ हम आर को वैल्यू इक्वल्स टू अगर 1 हम ले लें तो दैट 2 फंक्शंस आर मेरे ऑर्थोगोनल होंगे. इवन अगर हम इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं, जहां हम L2 स्पेस, तो वहां पर भी सिंपल हमारे दोनों फंक्शंस ऑर्थोगोनल होंगे इन दैट L2 स्पेस इफ एंड ओनली इफ दिस इंटीग्रल, और यहाँ इंटीग्रल में हमारा ये दोनों ही फंक्शंस लेते हैं दैट इज इक्वल टू 0. ओके, तो सिंपल सेंस ये है कि हमारा अगर ऑर्थोगोनल की बात करें दो फंक्शन का, तो इंटीग्रल एंड दैट डोमेन इक्वल्स टू 0, और उसका सेंस ये है कि वो दोनों फंक्शंस हमारे करस्पॉन्डिंग टू वेट वहां पे हमारा 1 है, और वो हम कहते हैं कि वो हमारे ऑर्थोगोनल है. बट
अगर हम कुछ और फंक्शंस उसमें डाल लें, दैट इज फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तब हम ये कहेंगे कि ये हमारा ये जीरो तब हो रहा है करस्पॉन्डिंग टू दैट वेट। वेट डालने पर हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा तब जीरो आ रहा है। तो दिस मीन्स कि ये दोनों फंक्शंस जो है ऑर्थोगोनल टू हैं बट करस्पॉन्डिंग टू दैट वेट फंक्शन। ओके, तो उस सेंस में है हमारा कि हमें कभी कभी कुछ ऐसा फंक्शन डालना पड़ता है जहां पर कि हमारा जो वैल्यू है वो हमारा जीरो हो जाए, तो हम कहें कि ये दोनों फंक्शंस हमारे ऑर्थोगोनल होंगे। ओके, और इन जनरल सेंस इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो यूजुअली आपके अगर वो ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल है, तो अगर उनका इंटीग्रल उस में जीरो आ रहा है दैट मीन्स वो आपके ऑर्थोगोनल फंक्शंस होंगे। ओके, और जब कभी कि ये हमारे ऑर्थोगोनल ना हो रहे हो लेकिन हमें कुछ एक फंक्शन ऐसा डालना हो उसके बाद इंटीग्रल की वैल्यू हमारी जीरो हो रही है और दैट फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन दैट गिवन डोमेन, तो सेंस में ये हम ये कहें कि ये दोनों हमारे ऑर्थोगोनल है, तब ये कहूंगा कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है करस्पॉन्डिंग टू दैट वेट फंक्शन, क्योंकि अगर इस वेट फंक्शन को डालने पर ही ये जीरो आ रहा है, अदरवाइज वो मेरे नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये आर का थोड़ा सा रोल वहां हो जाता है कि कहीं कहीं इंटीग्रल की वैल्यू वो है नॉन जीरो आती है बट हम वेट डालने पे वो हमारा जीरो हो जाता है। ओके, अब आप ये नहीं कहो कि हम जीरो ही वेट डाल दें, यहाँ पे हम सीधे जीरो ही पुट कर दें यहाँ, तो नहीं नहीं नहीं, ये आपके एक जो है नॉन जीरो कंटीन्यूअस फंक्शन। हाँ, यहाँ पे दिस वेट इक्वल्स टू वन, दिस इज द आइडियल केस, दिस टू आर ओनली ऑर्थोगोनल। ओके, तो यहाँ पे ये चीज है कि आप उसको ऑर्थोगोनल वेट डालने पे हम उस चीज को हम बना भी सकते हैं, कितना वेट डालना है डिपेंडिंग ऑन द यू एंड वी फंक्शंस। ओके, तो इस सेंस में हमें ओके, तो यहाँ पे हम इसका प्रूफ की बात कर रहे हैं कि हमें प्रूफ करनी है कि यदि हमारा इक्वेशन फर्स्ट होल्ड करे और लैम्डा एंड म्यू हमारे दो पैरामीटर्स हैं, करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या है मेरा, यू और वी। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या कहती है, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये कहती है कि इक्वेशन फर्स्ट है आपकी इस टाइप में, अगर मैं यहाँ लिखूं व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट हियर, तो इक्वेशन फर्स्ट इज आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं p ऑफ y प्राइम एंड देन प्राइम प्लस q equals to 0, that equals to 0. Okay, so this is your first equation. So here for lambda के लिए ये कह रहे हैं कि lambda के लिए अगर आपका सोल्यूशन, lambda के लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या मिल रहा है, u। u मींस क्या हो गया हमारा, ये lambda के करस्पॉन्डिंग हमें मिल रहा है u, तो मींस y equals to u with the solution. This means this thing, this equals to 0. वो हमारा क्या हो जाता है, v हो जाता है, जो सोल्यूशन the solution of this second parameter, this is r of v, this equals to 0. तो this means these two conditions आपको दिए हुए हैं और आपको ये कहते हैं कि यदि ये रॉस्किन अगर मेरा 0 हो तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों जो फंक्शंस जो मेरे करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस आ रहे हैं फॉर डिस्टिंक्ट पैरामीटर, वो दोनों हमारे ऑर्थोगोनल होंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट आर वेट फंक्शन। ओके, तो इस चीज को हम नेक्स्ट पेज पे हम इसको ट्राई करते हैं प्रूव करने के लिए। सो नेक्स्ट पेज प्रूफ, so we write this thing, so here from the hypothesis we have this p of u prime, जो हमने यहाँ भी लिखा u prime plus q of u plus lambda rq, that equals to 0, and second one, this v be the solution of parameter corresponding to parameter mu. So this is second equation. Okay, and from these two, if we multiply here, suppose something v, अगर हम इसमें v से multiply कर दें
और इसमें हम ओके u से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सब्ट्रैक्टिंग दीज टू, सो which implies that which imply that you can if you multiply and subtracting these to minus the lambda minus mu, this is lambda minus mu, and this product is r u and v, so this is r u v. Okay, and this term is cancelled out, so this equals to this minus this, so this equals to p v. Okay, so because this minus this, so here this minus of, if you multiply v here, so this minus p of u prime prime v minus p v prime, so this plus this thing minus okay minus of u, that equals to 0. If you're multiplying these two and subtracting from this to this, you get this thing. Okay, so this implies lambda minus mu r u v, this equals to, this is p v prime prime u and minus p u prime prime v. Okay, so here if you look this, this is the first function derivative of that, and here this function derivative of, okay, so if we adding here this derivative and this function, so this means p v prime this function and derivative of that, that is u prime. So if we adding this, so we subtracting here this term. Okay, so here we adding this and subtracting this. So if we take this term, this first term with this plus this term, so here you can write pv prime this derivative of that u plus here the first function and derivative of second. Okay, then minus, okay, so if we take these two together and then the rest are these two, so here the minus is common, so p of u prime v plus, because minus is common, so p of v prime, and this is u prime. Okay, so this can be written as okay, so this can be written as u prime and here v prime. We interchange this thing. Okay, so u prime v prime. Okay, so this thing. Okay, so हेलो this सर, हाँ तो यहाँ पी पी यू प्राइम के बाद भी प्राइम लगेगा ना ब्रैकेट के बाद, और ये जैसे ये जो थर्ड टर्म आपने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, this इसके yes हाँ yes ये प्राइम ना यहाँ ये प्राइम. ये सर, हाँ ये ओके, थैंक यू देखिए छूट रहा है. ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ रख ली और इसको, ये तो ठीक है, इसको हमने सिर्फ इंटरचेंज कर लिया, इसको हमने इंटरचेंज कर लिया यहाँ पे. ओके, सो ओके, तो दिस बिकम्स, इसे आप लिख सकते हैं कि दिस इज first function and derivative of that, and this is function derivative of that. Okay, so this means this is your d over dx, means आप उसको basically differentiate कर रहे हैं, और derivative of which one, this is p v prime and v, this is u. Okay, इसकी derivative क्या हो जाएगी, इसकी derivative जाएगी first function derivative of first function this and plus, okay, तो इसको आप ये ले सकते हो एंड माइनस ऑफ दिस, तो इसको हम दोनों को हम क्लब कर लें, दिस माइनस ऑफ इसकी डेरिवेटिव को ले सकते हैं p ऑफ u प्राइम एंड दिस इज v. ओके, तो d by dx of that, d by dx of that, this is d by dx of these two. ओके, तो आप इस फॉर्म में लिख लिया एंड सपोज दिस इज योर एनी इक्वेशन, सपोज 1 2 3 तक तो हम आ गए थे, दिस इज क्वेश्चन नंबर सपोज 4. ओके, सो नाउ इंटीग्रेटिंग, so now integrating of equation 4, because 2 and 3 are boundary conditions, here equation this is 4. Okay, so this 4 leads to equation 4 leads to you can write here, this is lambda minus mu and r u v. So this means lambda and mu are the parameter, real parameter. So this is the constant one. So we take outside that integral and then integrating to a to b. So these are the functions, and these functions are, you can write in the variable s form, and here we take this interval is a to b. So this is ts. Okay, so if we integrate this with respect to x and then
limits there a to b, so this equals to this thing. And here similarly, if we integrate this term with respect to dx here, and then limits are a to b, so if we integrate this thing, so only we get this term, because integration of that term equals to this thing. And then putting the limits there, so we can write directly this pv prime u minus, because integration of that is same, this u prime and v, and integral are this is a to b. Okay, so limits are a to b. Okay, so here we integrating on this this and limiting their a to b. So this becomes this thing. Okay, so here what is the value of this thing? Okay, so here you take this. This is your p. P be the common from these two functions. This becomes we can write v prime u minus u prime v, and the limits are a to b. Limits are a to b. Okay, so limits are from a to b. Okay, and what is this thing here? If we try to find what is the Roskian of uv, so this is uv u prime. Okay, so this is uv u prime v prime, that equals to uv prime minus vu prime. So this is uv prime minus vu prime. This is the your Roskian basically. This is the Roskian of uv. Okay, so this can be written as this equals to basically this integral. This also equals to this equals to p. Okay, so this is p Roskian of uv with limits are a and b. Okay, so these limits are a and b. Okay, and in your theorem, this is given that this equals to 0. This equals to 0. This equals to 0. This is in your theorem. This is given that if this says that this equals to 0, then if this equals to 0, this means this left hand side equals to 0, and u and lambda and mu are not equal, because these two are distinct one. So that implies this equals to 0. Okay, so you can write this here. This is lambda minus mu, left hand side a to b. This is r u v. This equals to this thing, because this value is this thing, and this equals to 0. This is given. This is given in your theorem. Okay, so this implies this equals to 0. Okay, and because these are not equal to 0, because lambda and mu are distinct one, this implies that this equals to 0, and your theorem is proven. Okay, so आप इसे कर लेंगे. Okay, फिर next theorem, theorem third. Basically, theorem third says that you can okay, so here we can write here some remark from theorem 2. From theorem 2, it is clear that if we have conditions which apply this p Roskian of uv with domain AB that equals to 0, then the desired basically this implies if this equals to 0, this equals to 0 means finally this equals to 0. Okay, so this means these two are orthogonal. So this desired orthogonal property, this desired orthogonal property follows. Okay, okay. This means you can prove that if this equals to 0, or you can say that if these two are orthogonal to with respect to weight function Rs. Okay, so if okay, so next करते हैं न्यूमेरिकल. अभी आज रहने देते हैं, न्यूमेरिकल नेक्स्ट टर्म पे कर लेंगे. Okay, so next theorem is 3. So on next page theorem 3. Theorem third. This theorem says that
let the hypothesis of theorem first be satisfied. ओके, तो हम ये मान के चले, बार बार वो चीज हम थ्योरम फर्स्ट ना लिखें. सपोज सारी कंडीशन, सपोज थ्योरम फर्स्ट की जितनी भी assumptions है वो हमारी फुलफिल कर रही हैं. एंड एडिशन टू दिस, इन एडिशन we say that there are two eigenfunctions, that is ym and say yn. Okay, be the two solutions, basically two eigenfunctions. These eigenfunctions of the boundary value problem, which is equation 1 and इक्वेशन 2. ओके, तो हम यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और 2 ले रहे हैं, 3 को भी हम नहीं ले रहे हैं इसमें. ओके, तो अगर ये हमारे आइगन फंक्शंस हैं इन दो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, स्टर्म ल्यूविल जो प्रॉब्लम है हमारी, ओके, करस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंक्ट, क्योंकि ये हमारे आइगन फंक्शंस हैं तो ये करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज होंगी, एंड दैट आइगन वैल्यूज आर लैम्डा. ओके, तो हम अगर उन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज अगर हम लें, दैट डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज एंड सपोज लैम्डा m करस्पॉन्डिंग टू दैट, एंड लैम्डा n के लिए हमें yn मिले, लैम्डा m के लिए हमें ym मिले. ओके, तो अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना होगा कि देन you have to prove that this P of Gaussian of these two eigenfunctions on this domain AB is equals to 0. Okay, see this is equation number 5. Okay, and if the functional value means PA that equals to 0, then equation 5 holds, this holds without the use of equation 2a. This means you have 2b, equation 2b, you have to need it. Okay, तो ये आपको जरूरत होगी. और यदि हमारा pb अगर 0 हो जाए तो हमारा जो एवं कंडीशन 5 है ये मेरा होल्ड करेगा. ओके, और विदाउट द यूज ऑफ इक्वेशन 2b. दिस मींस इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2a कंडीशन जो है वो आपको जरूरत होगी. ओके, तो ये आपका थ्योरम है, और इसमें कंडीशन दिया है कि अगर ये 0 हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2a से काम चल जाएगा. अगर आपका ये कंडीशन दी हो तो आपको सिर्फ 2b से काम हो जाएगा, 2a से काम हो जाएगा, 2b की जरूरत नहीं. ओके, तो without the use of this 2b. Okay, so proof बहुत ही सिंपल है. हम शुरुआत ही करें कि हमारा जो ये दोनों है ये हमारा नॉन जीरो है. ओके, तो हम शुरुआत ही करें कि हम PA भी हमारा नॉन जीरो है. पहले हम ये प्रूव कर लें, उसके बाद फिर हम इस पर्टिकुलर केस पे आएंगे. तो इफ PA भी मेरा नॉन जीरो है और PB दोनों हमारे नॉन जीरो हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन जो हमारा 2a है, विच इज द बाउंड्री कंडीशन जो गिवन है, वहां पे अगर आप देखें कि वो आपकी बाउंड्री कंडीशन क्या है, तो दैट इज बाउंड्री कंडीशन इज YNA. ओके, बिकॉज दीज आर द सॉल्यूशन वन, तो दिस प्लस M2 yn prime at a that equals to 0. This is your equation number 2a. एंड साथ ही साथ आपके जो सेकेंड के लिए जो है, क्योंकि yn मेरा करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा n आइगन फंक्शन है और ym भी इसको सेटिस्फाई करेगा. तो दिस मींस yma एंड m2 ym prime a that equals to 0. So this is your equation 2a. Okay, so without loss of generality, we assume that, let us assume that
हमारा ये कहता है कि इसमें एटलीस्ट वन जो है नॉन जीरो होना चाहिए। ये आपने लिखा है कि बाउंड्री कंडीशन में दोनों दोनों जीरो ना हो जाए, तो कम से कम एक नॉन जीरो हो। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, एज्यूम दैट कि हमारा सपोज m1 जो है मेरा वो नॉन जीरो है। ओके, एंड वी ट्राई टू दिस m2 को हम क्या करें, एलिमिनेट करें बाय मल्टीप्लाइंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ओके, सो वी हैव टू एलिमिनेट, सो elimination of m2 from these two equations, from the above two equations. Okay, so we get, and this leads to equation with this leads to okay, तो इफ वी m2 को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा वाई एम प्राइम ए से, और इसमें क्या करना होगा वाई एन प्राइम ए से। तो मल्टीप्लाई कर लें और देन सब्ट्रैक्ट कर लें, तो दिस सेकंड टर्म आपका कैंसिल होगा, और इसमें क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी m1 और यहाँ पे वाई एम प्राइम। ओके, तो दिस, और यहाँ पे भी m1 है, तो m1 आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो दिस इज सिंपली वाई एन ए मल्टीप्लाई बाई, इसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई एन प्राइम का कर रहे हैं, दिस इज वाई m. Okay, so this is multiplied by ym prime a, and then subtracting here, this is ym a, और इसमें आपने मल्टीप्लाई किया है ये yn prime, this is yn prime a. Okay, so this equals to 0। तो ये चीज आ गई। अगर आपने मान लिया कि ये हमारा m1 नॉन जीरो है, तो दिस बिकम्स this thing। Okay, this equation holds, or here you take m1 is non-zero, and product of these two is zero, this means this term is zero, तो ये टर्म आपका क्या होगा, जीरो होगा। Okay, so next page पे हम चलें और quickly वह solve करें। Okay, so next page, so we can write here since your m1 is non-zero, so we have this yna ym prime a minus yma yn prime a, that equals to 0। okay, this is 0। okay, and similarly अगर आप इस तरह से करें कि सेकेंड वाले में जो कि m3 और m4 वाले जो दूसरे कंडीशन है, जैसे 2b। ओके, तो फॉर 2b, तो 2b के लिए अगर आपने ले लिया m4 इज नॉट इक्वल टू 0, और 2b वाले केस के लिए अगर आपने करना चाहा, तो सिमिलरली m3 एंड m4 है, तो अगर हमने m4 को नॉन जीरो ले लिया, या फिर आप चाहें तो m3 किसी एक को आपने नॉन जीरो ले लिया इन इक्वेशन 2b, so it is seen that it is, अब इसको खुद से चेक कर लेना, हम थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, टाइम कम है, तो हम सेम चीज करके उसी तरह से आप बी वाले के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि वो हमारा नॉन जीरो होगा, तो दिस मींस दिस सैटिस्फाइज दिस कंडीशन। ओके, तो एक इन पॉइंट्स ए के लिए था, एक 2b आपके लिए दूसरे के लिए था, तो आप सिमिलरली आप ऐसा आप फाइंड कर सकते हो। ओके, सो फ्रॉम अबव two relations, so from the relations 6 and 7, it is obvious that equation 5 is satisfied। okay, आप देख लें कैसे satisfied है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपका इक्वेशन 5 क्या कहता है, इक्वेशन 5 कहता है, व्हाट इज योर इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 जो है वो ये कहता है कि P of W of yn this Roskian at AB, so this means this equals to P at B, okay, P at B and Roskian of this thing। okay, तो Roskian का सेंस क्या है कि आप y, this is what is the value of Roskian, yn, this is ym prime, okay, and this equals to yn prime minus yn and ym prime।
Okay, so if we putting here this value b, this is ym b yn prime b, okay, minus this is yn b yn prime b. Okay, this is first term. Then minus, if we put lower limit is p of a ym a yn prime a minus yn a ym prime a. Okay, if you're looking here, this equation number 6, look here, equation 6 is yn a yn prime a, this equals to this thing. Okay, this thing, so this means these two are same, so this becomes 0. Okay, from equation 7, look here, this equals to this thing, so this minus this equals to 0. That's why this into 0, this equals to 0. So that's why equation 5 is satisfies. Okay, equation 5 is satisfies. Okay, and here next one, if zero, this portion is 0, this portion is 0, so you only need to portion. Okay, तो सिर्फ आपका पी अगर 0 हो गया तो हमें इस इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं. ओके, तो दिस मींस यहाँ पे हमें 2a जो कंडीशन है, जो a पॉइंट के लिए है, ये हमारी किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है? दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 2a इक्वेशन. ओके, और दिस इज करस्पॉन्डिंग टू इक्वेशन 2b. ओके, तो जब हमारा पी 0 हो गया तो हमें इस 2a कंडीशन की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमारा 2b से ही काम हो जाएगा. तो इफ p equals to 0, then the equation or then the relation, that is equation 5, this hold. Okay, this holds since क्योंकि p of w of yn with a and b, this equals to pb and this thing, only this thing, because p equals to 0, so this becomes 0. Okay, so this into ym b yn prime b minus yn b and ym prime b. Okay, and here this equals to 0 because these two are same, this equals to 0. तो हमारा इक्वेशन जो 5 है वो होल्ड कर जाएगा, हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं अगर pa हमारा 0 हो. Similarly, if pb equals to 0, similarly आप इसे चेक कर लेना. if pb मेरा 0 हो जाए, pb अगर हमारा this pb 0, तो pb अगर 0 हो गया तो this is 0, तो हमें सिर्फ हमारे पास ये टर्म होगा pa into this, और ये हमारा सिर्फ इक्वेशन जो है 2a से ही काम हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं. तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कि इक्वेशन 5 आपका क्या होगा, होल्ड करेगा और हमें उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इन व्यू ऑफ इक्वेशन 7, सिमिलर इन द केस ऑफ व्हेन वी यूज दिस थिंग. ओके, तो इसको आप खुद से कर रहे हैं ना. फिर हम कल हम जो है इसके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे. ठीक है, तो आज हाँ बताएं. सर, तो फिर ये लास्ट में सिर्फ p रोशकिन ऑफ ym एंड yn टोटल में a to the power b is equal to 0 ही हो जाएगा. लास्ट यही हो जाएगा. किसमें बताएं सर, एकदम लास्ट में अगर हम p of b is equal to 0 भी कंसीडर कर ले तो फिर हाँ, तो p और b को अब इसी में नहीं ना करेंगे हम, p और b इसमें करेंगे ना. ये हमारा रिलेशन 5 है ना, रिलेशन होल्ड करना चाहिए. तो ये pb मेरा अगर 0 हो जाए, तो आपके पास सिर्फ ये टर्म होगा, क्योंकि ये टर्म आपको इस कंडीशन से कोई मतलब ही नहीं, ये हो इसकी वैल्यू क्या हो. जब pb 0 है तो ये चाहे कुछ भी हो, तो आपको दिस इक्वेशन को जरूरत पड़ेगी. आप सिर्फ इसी इक्वेशन से, जो कि आपका 2a से निकल के आ रहा है, तो बाउंड्री कंडीशन 2a की यूज होकर आ रही है, इसीलिए हमने लिखा है ना उसमें. तो आप अगर आप देखें थ्योरम में, तो थ्योरम में लिखा हुआ है कि इफ pb इक्वल्स टू 0, देन इक्वेशन 5 जो यूज होगा विदाउट यूज ऑफ इक्वेशन 2b. तो इक्वेशन किसके में यूज ही नहीं होगा, सिर्फ हमें 2a से ही हमारा काम हो जाएगा बाउंड्री कंडीशन. इक्वेशन 5 को सेटिस्फाई करने के लिए हमें सिर्फ 2a कंडीशन ही चाहिए अगर pb मेरा 0 है. सिमिलरली अगर हमारा pa 0 है तो हमें सिर्फ इक्वेशन 2b चाहिए, 2a की हमें कोई जरूरत ही नहीं है. ठीक है, और अगर मेरा pa और pb दोनों नॉन 0 है तो हमारा दोनों कंडीशंस को चाहिए, इक्वेशन 2a भी चाहिए और 2b भी चाहिए. क्लियर है?
यस सर। हाँ हाँ ठीक ठीक है, टाइम हो गया है। और फिर कल 4 बजे आपकी क्लास होगी। तो इसमें हम कुछ एक छोटा थ्योरम है, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आए। तो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर